हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ्स रिलेटेड टू ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। Molecularity of a reaction. What is molecularity of a reaction? The number of reacting species, atoms, ions, or molecules taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction. Okay बच्चों, like ये रिएक्टिंग स्पीशी है एटम और एक ये एक एटम है। ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ये ए का एटम है, ये भी ए का एटम है। ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे और ये प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन होगा। ओके, इनकी कोलिजन से। तो जितने एटम्स या स्पीशीज कोलाइड करेंगे टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली is the molecularity of a reaction. So here molecularity will be 2. ओके बच्चों, ऐसी अगर यहाँ 3 एटम्स होते आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते, कोलाइड कर रहे होते, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती 3। ओके बच्चों, now there are some notes about molecularity. Okay, molecularity is applicable only for elementary reactions. Okay बच्चों, खाली मोलिकुलरिटी खाली एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल होती है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। सो फॉर complex reactions it has no meaning. मोलिकुलरिटी का कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए कोई मीनिंग नहीं होता। ओके बच्चों, मोलिकुलरिटी कैनॉट बी ज़ीरो। मोलिकुलरिटी ज़ीरो नहीं हो सकती, और फ्रैक्शन नहीं हो सकती, और फ्रैक्शन और कोई नॉन इंटीजर नहीं हो सकती। ओके, और अ नॉन इंटीजर। सो ज़ीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, नॉन इंटीजर नहीं हो सकती, एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, always a positive integer. Okay, so molecularity 1 हो सकती है ऑफ अ रिएक्शन, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन। ओके बच्चों, नाउ reaction is unimolecular. Reaction is unimolecular if one reacting species is involved. अगर एक ही रिएक्टिंग स्पीशी इन्वॉल्व होगी रिएक्शन में, तो रिएक्शन यूनिमोलिकुलर होगा। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल decomposition of ammonium nitrite। ओके बच्चों,
NH4 ammonium nitrite is NH4 NO2. This decomposes to give N2 plus 2H2O. ओके बच्चों, reaction is bimolecular if two, एक सेकेंड बच्चों, if two reacting species, simultaneously collide. For example, dissociation of hydrogen iodide. Dissociation of hydrogen iodide. 2Hi, hydrogen iodide is Hi. 2Hi, एक सेकेंड बच्चों, hydrogen iodide is Hi. So 2Hi gives H2 plus I2. Now, similarly, ट्राईमोलिकुलर, आई होप आप सभी को ये समझ आ रहा होगा और ये पता लग गया होगा ट्राईमोलिकुलर रिएक्शंस क्या होते हैं और या फिर टर्मोलिकुलर इन्हें कहते हैं, टर्मोलिकुलर रिएक्शंस. Similarly, trimolecular or termolecular reactions involve simultaneous collision between three reacting species. For example, two NO plus O2 gives 2NO2. ओके बच्चों, नाउ अब 3 से ज़्यादा अगर मोलिकुलैरिटी नहीं होती, रेयरेस्ट होती है रिएक्शंस की, सो 3 तक ही होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल से ज़्यादा कोलाइड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है. ओके बच्चों, वो क्यों कम होती है इसमें आप देख सकते हो, जैसे ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये आपस में कांटेक्ट में है, ये भी आपस में कांटेक्ट में है, ये भी हैं, लेकिन ये दोनों नहीं है, ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है. सो प्रॉपर साइमल्टेनियस कोलिजन नहीं हो पाती. सो इसलिए ये मॉलिक्यूल बहुत रेयरेस्ट होते हैं, ये रिएक्शंस बहुत रेयरेस्ट होते हैं. ओके बच्चों, सो write it down. Since the probability of simultaneous collision of more than 3 molecules
is very rare since the probability of simultaneous collision of more than 3 molecules is very rare. Molecularity does not exceed does not exceed the value of 3. ओके बच्चों, इवन जो रिएक्शंस विद मॉलिक्युलरिटी 3 होते हैं वो भी बहुत रेयर होते हैं. ओके बच्चों, एंड स्लो टू प्रोसीड होते हैं. हेंस reactions hence reactions with molecularity 3 are very rare and slow to proceed. Okay बच्चों, and slow to proceed. Let us take an example. KClO3 plus 6FeSO4, okay, plus 3H2SO4 sulfuric acid gives KCl plus 3Fe2 SO4 thrice 3Fe2 SO4 thrice plus 3H2O. ओके, नाउ इससे देख के लगेगा कि ये 10th ऑर्डर रिएक्शन है, बट नहीं, दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. It is a complex reaction, okay, which means it takes place in several steps. Okay बच्चों, and the slowest step will determine the overall rate of the reaction. Okay, and the slowest step is we also know is the RDS, rate determining step. Okay, and जो slowest step होगा उसका जो order होगा वही ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होगा कॉम्प्लेक्स फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. ओके, सो जो आरडीएस स्टेप है उसका ऑर्डर 2 होगा इस रिएक्शन के लिए, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए. सो तभी इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है, ऑर्डर 2 है. सो दिस इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके बच्चों, आई होप आप सभी को ये समझ आ रहा होगा. Now let's move ahead. 2H2O2 in the presence of iodide catalyst. Iodide is acting as a catalyst in this reaction. Okay, in alkaline medium, this gives 2H2O plus O2. So rate हमें अब आता है बच्चों, कैसे लिखते हैं? Rate is minus dH2O2 by dt is equal to K H2O2 I माइनस. अब हमने यहाँ 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये सिंपल स्टेप, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है. It is a complex reaction which takes place in 2 steps. Okay बच्चों, so इसलिए यहाँ 1/2 इसलिए यहाँ 2 से डिवाइड नहीं किया गया इस क्वांटिटी को. ओके बच्चों,
सो और जो RDS स्टेप होगा उसमें H2O2 का कोएफिशिएंट 1 होगा, इसलिए यहाँ 1 से ही डिवाइड किया गया है, यानी कि ये सिंपली ऐसे लिखा गया है। ओके बच्चों, 2 से नहीं डिवाइड किया गया, सिंपली ऐसे लिखा गया है। ऑलराइट, सो फर्स्ट स्टेप इज H2O2 plus I minus iodide ion gives H2O plus IO minus, and its molecularity is 2 for this reaction. Okay, now second step is, this is the RDS step. Okay, it is determined experimentally. This is the RDS step, rate determining step. Okay bachcho, now second step is IO minus plus H2O2. This gives H2O plus I minus iodide ion plus O2. Its molecularity is also 2 for this reaction. Okay, yeah, so now here IO minus is acting as an intermediate because it is formed during the course of the reaction. Okay, and but it is not in the overall balanced equation. See, IO minus is not anywhere. Okay, it is formed during the course of the reaction and it is also consumed during the course of the reaction. Okay, so such species are called intermediates. Okay, here step 1 is the RDS slowest step. Okay, so it's a rate determining step. Okay bachcho, okay. Now write down some notes for elementary step, यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए. फॉर एलिमेंट्री स्टेप, order and molecularity are numerically same. Are numerically same. ओके, यानी कि सिंगल स्टेप के लिए ऑर्डर भी सेम होगा और मोलिकुलैरिटी की वैल्यू भी सेम होगी. ओके, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए ऑर्डर कैसे लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ स्लोएस्ट स्टेप को देखा जाता है. ओके, और मोलिकुलैरिटी भी एलिमेंट्री स्टेप के लिए देखी जाती है. कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए तो वो एप्लीकेबल ही नहीं होती है, हम पहले देख चुके हैं वीडियो की स्टार्टिंग में. सो मोलिकुलैरिटी भी स्लोएस्ट स्टेप से ही निकलती है. So molecularity of the slowest step is same as the order of the overall reaction. Okay बच्चों, so for complex reactions, molecularity of the slowest step is same molecularity of the slowest step is same as the order of the overall reaction. Okay बच्चों, okay, let's move ahead. Now most common reactions are bimolecular reactions. Okay, क्योंकि two reacting species can easily collide with each other. Okay, so they are most common type of reactions. So most common type of reactions are bimolecular reactions. Okay बच्चों, write it down. So AB, it's a bimolecular.
reaction. Why molecular? It's most common. Okay. Now next comes trimolecular. A interacts collides with B, and they collide with C. Okay. A collides with C, B collides with C. So it's a tri or trimolecular और termolecular भी कह सकते हैं reaction. Okay, these are rare type of reactions. Okay, and next comes tetramolecular reaction. Okay, this is A, this is B, this is C, this is D. Okay, and they collide. Therefore the probability of their simultaneous collision will be very low. These are tetramolecular, so they are rarest type of reactions. Okay, tetramolecular, these type of reactions are very rarest. Okay, tetramolecular, rarest. Okay, ये कंसेप्ट था मॉलिक्यूलैरिटी का ऑफ अ रिएक्शन का. ओके बच्चों, नेक्स्ट विल डू integrated rate law equation. Okay, for zero order reaction particularly in this video. Okay, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर का भी करेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर का भी करेंगे. अभी फिलहाल हम जीरो ऑर्डर का करेंगे इस वीडियो में. ओके, और जीरो ऑर्डर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके ग्राफ्स भी पढ़ेंगे. ऑलराइट बच्चों, या integrated rate law equation. Integrated rate law equation. Write it down. It is an equation which expresses concentration of reactant or product. एक सेकंड बच्चों, reactant or product as a function of time. Okay, and it is obtained by and integrated rate law है, इससे पता लग रहा होगा कि इंटीग्रेशन होनी है इसमें. ओके, and it is obtained by integrating. ओके बच्चों, integrating differential रेट लॉ इक्वेशन. ओके, डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन मिल जाएगी. ओके बच्चों, integrated rate law equation. It is an equation which expresses concentration of reactant or product as a function of time, and it is obtained by integrating differential rate law equation. Okay बच्चों, okay, yeah. Now let's start zero order reactions. Zero order reactions. Okay, for example of zero order reactions are reverse Haber process. जो ज़्यादातर reactions कैटलिस्ट पे होते हैं ना, वो जीरो ऑर्डर ही होते हैं ज़्यादातर, लाइक ऑन प्लैटिनम सरफेस. ओके, एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं. फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक सेकेंड, रिएक्शन
ओके। रिवर्स हेबर रिएक्शन क्या होता है, या इसे कहें तो प्रोसेस होता है, इसे कह लो रिवर्स हेबर प्रोसेस। reverse Haber process. It's a reverse Haber process. Okay. 2NH3 gaseous gives, in the presence of platinum catalyst, gives N2 gaseous plus 3H2 gas. This is the reverse Haber process. Okay. Okay. Now, what is the meaning of zero order reaction? Zero order reactions, zero order reaction means that the rate of the reaction, हम ऑर्डर कैसे देखते हैं, किसी भी उसकी जो पावर होती है रिएक्टेंट की एलिमेंट्री प्रोसेस में, उसको उसको रेज टू पावर कर देते हैं। 1 होएगी तो 1 कर देंगे, 0 होएगी तो 0 कर देंगे, 2 होएगी तो 2 कर देंगे, एंड सो ऑन। सो यानी कि ए की पावर, रिएक्टेंट की पावर 0 होएगी अगर ए रिएक्टेंट है किसी इक्वेशन में, ओके, तभी वो 0 ऑर्डर आएगा, ओके। So it's a zero order reaction. So zero order reaction means that the rate of the reaction is proportional, is proportional to, is proportional to 0 power of the concentration of reactants. जैसे मैंने ये लिखा है अभी, concentration of reactant, 0 power of the concentration of reactant. Here in this case is reactant is A, so A concentration of A की power 0, 0 power of the concentration of reactants, 0 power of the concentration of reactants. This means that rate of a reaction, let me write rate. A is the reaction, A is the reactant and A changes to product. This is the chemical reaction, okay. So what will be the rate? Rate will be K, rate constant, into A ki power 0, okay, for zero order reactions. So rate is equal to K, okay. Anything raised to power 0 is 1, so A ki power 0 is 1, so K into 1 is K, so rate is equal to K, okay, for zero order reactions. So this means that rate of a reaction for zero order reactions, rate of a reaction is independent of the concentration of reactants, okay बच्चों, okay, क्योंकि ये टर्म तो हट ही जाती है, इसकी पावर 0 हो जाती है, 1 हो जाता है. So rate of a reaction for zero order reactions, rate of a reaction is independent of the concentration of the reactants, okay बच्चों. Yeah. Let us consider a reaction. Let us consider a reaction. R changes to P, okay. So rate will be, we know how to write rate, minus dr by dt equal to, for zero order reaction how we write rate, rate is equal to K reactant की power 0, okay बच्चों. This we have just seen now here, okay. So anything raised to power 0 is 1, so R की concentration of R की power 0 is 1, so K into 1 will be K, okay, on the RHS, and on the, so and on the LHS is simply minus dr by dt equal, so minus dr by dt, so minus dr by dt is equal to K, okay. Now just take dt on the RHS, so we get minus dr equal to K dt, okay. Now integrate this equation on both sides. Integrating on both
sides, integrating on both sides. So what is the equation? Let me write down again. Minus dr equal to k dt, minus dr equal to k dt. Okay, k dt. So let's integrate when t from t to 0 to t. Okay, and in when time is t equal to 0, so concentration of reactant is initial concentration of reactant, which is r naught. Okay, and at time t concentration of r, let it be r. Okay, so now we'll just integrate. Just a second बच्चों, we'll take minus sign to the, ओके यहीं रहने दो माइनस साइन को, कोई नहीं, ठीक है, माइनस साइन लगा देते हैं यहाँ. सो माइनस साइन dr, integration of dr is r, and we have to put the values r and r naught. So upper limit minus lower limit, so r minus r naught, okay, brackets, okay, is equal to integration of k dt is, k will come out, integration of dt is t, so t, k, so it will become kt. Okay, now minus r plus minus minus plus r naught equal to kt. Now take kt to the LHS and minus r to the RHS, so we'll get r, we have taken r to the RHS, so r equal to, and we have taken kt to the LHS, so minus kt plus, and on LHS we also have r naught, so plus r naught. Okay बच्चों, this is the integrated rate law equation. Okay, write it down. This is the integrated rate law equation for zero order reaction. Okay, for zero order reaction, this equation. Okay बच्चों, just a second बच्चों. Okay, now you can simply see this equation. ये जो इक्वेशन है ये सिंपली उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की तरह है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ c इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ r है, दैट इज r नोट, x t हो गया, स्लोप m माइनस के होगी, एंड कंसंट्रेशन ऑफ r ये y हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t ये y हो गया. ओके, सो एक सेकेंड बच्चों. So we can draw a graph between concentration of reactant R versus time graph. Okay, so let's draw a graph. This is time. Okay, for this equation R equal to minus kt plus r naught. Okay, so concentration of R y, which is equal to minus kt plus r naught. Time is this on the x-axis, so it's a straight line with slope, with a negative slope minus k. Okay, so its slope, so minus k is equal to slope of this line, straight line, and the y-intercept is r naught, so here is r naught, this one. Okay, so now we can write completion time for this reaction. Okay, that is t100. Completion time, let me write down first. Completion time,
It is written as T100. ओके 100% मतलब रिएक्शन हो गया. ओके कंप्लीशन, एक सेकेंड, टाइम, कंप्लीशन टाइम T100. ओके यानी कि रिएक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, यानी कि रिएक्टेंट पूरी तरह कंज्यूम हो चुका है to form products. Okay, in this case we have reactant R here. Okay, so when completion time, so we have to find completion time. So after, when the reaction is totally complete, R will be equal to 0. Concentration of reactant will be 0. Reactant will be fully consumed. Okay, so concentration of reactant R will be 0. Therefore, now put in this equation, this one, integrated rate law equation for zero order reaction. 0 equal to minus kT plus T is T100 plus R0. Okay, where T100 is completion time. So R0 is equal to K T100. Okay, so T100 is R0 by K. This is the completion time for zero order reaction. Okay. Okay. Similarly, we can find half-life period of for a zero order reaction. Okay. Second, half-life. Half-life period for a zero order reaction. Okay बच्चों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T50 से. ओके या फिर T हाफ से, कि हाफ रिएक्शन हो चुके कंप्लीट. ओके बच्चों. ओके सो यानी कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो R0 थी इनिशियली, उसकी हाफ हो चुकी है, रिएक्टेंट आधा कंज्यूम हो चुका है, रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो चुकी है. सो R concentration is R0 by 2. Okay बच्चों. So we just put in the equation, integrated rate law equation for zero order reaction. Therefore R is R0 by 2. So R0 by 2 is equal to minus KT. T is T half or T50 plus R0. Okay. Take minus KT50 to the LHS and R0 by 2 to the RHS. So we'll get K T50 is equal to R0 minus R0 by 2. Okay बच्चों. K T50 is equal to R0 will take common. So 1 minus 1 by 2, which is 1 by 2. So K T50 is R0 by 2. Okay. So T50 or T half-life is given for zero order reaction is given by R0 by 2K. Okay. Okay. ठीक है बच्चों. आगे बढ़ते हैं बच्चों. सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ R वर्सेस टाइम ग्राफ जो बनता है वो इस तरह बनता है. ये हमने देखा पहले भी. ये टाइम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ R ले लिया. ओके ठीक है. सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप माइनस K. वी हैव सीन ऑलरेडी. स्लोप इज इक्वल टू माइनस K. सो ये R0 हो गया. ओके एंड एक सेकेंड, ये जो है हम एक सेकेंड बच्चों कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं. वेट एंड वॉच. या सो ये टाइम इंटरवल T है यहाँ से यहाँ तक. ये भी टाइम इंटरवल
टी है। ये इक्वल टाइम इंटरवल्स मैंने ड्रॉ करें बच्चों, ये भी टी है, ये भी टी है, ये भी टी है। ओके, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सारे टाइम इंटरवल्स टी हैं। सो यहाँ से एक सेकेंड बच्चों, सो रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक आया इतने टाइम इंटरवल टी में। जितना टाइम रिएक्शन को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है उतना रिएक्शन को टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। इसका मतलब ये है। ओके, फिर रिएक्शन को यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में उतना ही टाइम लगेगा। फिर रिएक्शन को यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में भी उतना टाइम ही लगेगा। ओके, ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि इक्वल टाइम इंटरवल्स लगेंगे, उतने इक्वल रिएक्शन कंप्लीट होती जाएगी। ओके, यानी कि जितना टाइम रिएक्शन को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, उतना ही टाइम रिएक्शन को यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। ये जो कंसेप्ट है ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़े हेल्प, कभी कभी हेल्प करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें। ओके, सो वी कैन राइट आर, मान लो 100 थी रिएक्शन की क्वांटिटी। ओके, सो टी टाइम के बाद 80 होगी। एक सेकेंड बच्चों, रिएक्शन की क्वांटिटी 80 होगी टी टाइम के बाद, यानी कि 20 का ड्रॉप आया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 20 का ड्रॉप आया, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 20 का ड्रॉप आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 20 का ड्रॉप आएगा सेम टाइम इंटरवल में, क्योंकि सेम रिएक्शन सेम क्वांटिटी ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। मतलब उतनी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है जितनी इतनी इसमें कंप्लीट हो रही है, उतनी इसमें भी कंप्लीट हो रही है, उतनी इसमें भी कंप्लीट हो रही है, उतनी इसमें भी, उतनी इसमें भी। ओके, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ओके, सो 100 से 80 आने में 20 का ड्रॉप आया टाइम इंटरवल टी में। सो टी टाइम के बाद 60 हो गया ये, फिर टी टाइम के बाद फिर 40 हो जाएगा, 20 का फिर ड्रॉप आया, 20 का फिर ड्रॉप आया। ओके, सो फिर टी टाइम के बाद फिर 20 का ड्रॉप आएगा, ये 20 हो जाएगी। फिर टी टाइम के बाद फिर 20 का ड्रॉप आएगा। ओके, फिर ये ज़ीरो हो जाएगी। ऐसे रिएक्शन कंप्लीट होती है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, यानी कि सेम टाइम टी में सेम कंसंट्रेशन कह लो, सेम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेम कंसंट्रेशन का ड्रॉप आएगा। ओके, क्योंकि सेम कंसंट्रेशन का ड्रॉप आ रहा है हर टाइम इंटरवल टी के बाद। ओके, टाइम इंटरवल सेम है और ड्रॉप भी सेम आ रहा है। ओके, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की पहचान होती है, सेम टाइम टी में सेम कंसंट्रेशन का ड्रॉप आएगा। ओके बच्चों, सेम कंसंट्रेशन का ड्रॉप आएगा। ओके, नाउ बच्चों हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पढ़ लिया है, विच इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ओके, इसे हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे। के टी को हम आर एच एस में ले जाएंगे, आर को हम आर एच एस में ले जाएंगे। सो के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। ओके, सो टी इक्वल टू सो के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ओके, सो रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की वैल्यू होती है आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ओके, ऐसे लिखते हैं रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। नाउ we'll study about the graphs related to zero order reactions. Okay, graphs related to zero order reaction.
Graphs related to zero order reaction. First one, concentration of R versus time. Integrated rate law equation is for zero order reaction is R equal to minus KT plus R naught. Okay. So concentration of R versus time graph is a straight line with slope minus k. We have seen this already. Okay. And y intercept is R naught. Okay बच्चों, this one. Okay, next graph, graph B. अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को देखेंगे वर्सेस टाइम ग्राफ. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P वर्सेस टाइम ग्राफ. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी टाइम के साथ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी टाइम के साथ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओके बच्चों. सो नेक्स्ट ग्राफ, C graph. Rate versus concentration graph. Rate versus concentration graph. Okay, we know that rate for zero order reaction is independent of concentration because it's the concentration की power zero हो जाती है. Okay, for zero order reactions. So rate is independent of concentration for zero order reactions. So it's a straight. So graph of rate versus concentration is a straight line parallel to concentration axis. Okay, concentration बढ़ती रहेगी लेकिन rate of reaction same रहेगा. And this rate R is equal to K. Okay, इस लाइन की क्वेश्चन है R equal to K. ओके, रेट कांस्टेंट के बराबर होता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. ओके बच्चों. नाउ नेक्स्ट ग्राफ, डी ग्राफ. बच्चों मजा आ रहा है पढ़ने में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. T half life of a reaction R versus R naught graph. ओके, यानी कि versus initial concentration of reactants graph. Okay, so T half we know how it's given for zero order reaction is R naught by 2K. T half is, this is y is equal to mx, similar to y is equal to mx. T half is directly proportional to R naught. So it's a straight line passing through origin. Okay, with slope m is 1 by 2k. So slope of this line is equal to 1 by 2k. Okay बच्चों. Now let's move to the next graph. Rate versus time. Now we know rate for zero order reaction is given by K A की power concentration of reactant की power 0. Okay, where reactant is A. Okay, so यहाँ टाइम तो है ही नहीं इस इक्वेशन में. सो यानी कि रेट इंडिपेंडेंट है के. रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सॉरी, यहाँ टाइम टी तो, यहाँ टी तो है ही नहीं इस इक्वेशन में. सो रेट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है. ओके बच्चों, यानी कि रेट इज इंडिपेंडेंट. सो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी. ओके, दैट इज टाइम. सो टाइम इंक्रीज होता जाएगा लेकिन रेट वही रहेगा. सो रेट वर्सेस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ओके बच्चों. ओके, these are all the graphs for the zero order reactions, main graphs for zero order reactions बच्चों. ओके, इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं जेई में भी, नीट में भी. सो ये ग्राफ्स पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है. Now let's do some questions, okay, on zero order reactions. The
decomposition, the decomposition of NH3 on platinum surface, the decomposition of NH3 on platinum surface to NH3 gaseous platinum surface and 2 gas plus 3H2 gas is zero order with with K equal to 2.5 into 10 to the power minus 4 mole per liter, okay, per second, okay. It's a first order reaction. Units of rate constant is, we know that, mole per liter per second. For zero order reactions, sorry bachcho, for zero order reactions, units of rate constant K is mole per liter per second, okay. So what are the rates of production, what are the rates of production of N2, what are the rates of production of N2 and H2, okay bachcho. Pause this video for a moment bachcho and try to solve this question, okay. Okay, let's start its solution. 2NH3 gives N2 plus 3H2. It's given in the question, okay, and it's a zero order reaction. So first write down rate. What is the rate of this reaction? It's minus 1 by 2 dNH3 by dt, okay, and it's also equal to plus dN2 by dt, okay. Plus sign is because products are formed, and here minus sign is because reactant is consumed, okay. So concentration of reactant is decreasing over time, so negative sign represents that, okay, that concentration of reactant is decreasing over time. So minus 1 by 2 dNH3 by dt equal to, rate is also written by plus dN2 by dt, and it can also be written as plus 1 by 3 dH2 by dt, okay bachcho, dH2 by dt. For zero order reaction, we know now, for zero order reaction, rate is equal to K, rate constant. Rate is equal to rate constant K, okay. So therefore rate of, what we have to find in the question, what is asked to find in the question, rates of production of N2 and S2, okay, this and this. So therefore rate of production of N2, rate of production of N2 is equal to dN2 by dt, okay, and this rate is of production of N2 is equal to rate, okay, dN2 by dt is equal to rate, okay, this is equal to rate, and rate is equal to K for zero order reactions, okay. So this is equal to K, and K value is given in the question, which is 2.5 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. So this is the rate of production of N2, okay. Now we have to also find rate of production of H2. So let's find that also. Rate of production of H2 is given by
dH2/dt. ओके बच्चों, and this dH2/dt is equal to 1/3 dH2/dt is equal to rate. Okay, we can see it from here. So we'll take 3 above here. So dH2/dt will become 3 times rate, and rate is equal to K for zero order reactions. Okay, so it will become, so dH2/dt will become equal to 3K. Okay, 3 times rate, and rate is K is for zero order reactions, so 3K. So dH2/dt is equal to 3K. Okay बच्चों, dH2/dt is equal to 3 times of K. K value we know from the question, 3 into K value is 2.5 into 10 to the power minus 4. So 25, 3 is 75. So 7.5 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. That's the answer for this question बच्चों. Let's move to the next question. Rate constant of a reaction R is 154 liter per liter mole per second. Okay, what is the order of reaction? It's very simple बच्चों, try to solve it by yourself first. What is the order of reaction? A option, it's an MCQ type. First, B 0, C part, second or D part. Third, pause this video for a moment बच्चों and try to solve this question by yourself first. Okay, I hope you all have done. The answer is 0, B part. Okay, how? Let's see. Solution. We know units of rate constant. How it's given for nth order reaction. Units of rate constant K is given by, for nth order reaction, mole. Units of K for nth order reaction is given by, we know that, mole per liter की power 1 minus n second verse, where n is the order of the reaction. Okay, so, and if we put rate constant of a reaction R is this. Okay, it's given, and units of rate constant is mole per liter per second. Okay, it's given in the question. So if we put 0 here, if we put the value of n equal to 0, so we'll get, therefore, mole per liter the power 1 minus 0. Okay, so this is mole, 1 minus 0 is 1, so mole per liter per second. Okay, this is the units of rate constant of a reaction R, which is given in the question. Mole per liter, mole per second. Okay, so, or we can say that mole per liter per second. Okay, so therefore it's a zero order reaction. Okay बच्चों, therefore B is the answer. Okay, zero order reaction. Okay बच्चों, that's all for this video बच्चों. I hope आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ढेर सारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. हम और जल्दी आपके लिए वीडियोस बना के लाएंगे, और ऐसी ढेर सारी. ओके, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और पढ़ाई में जी तोड़ मेहनत करें. थैंक यू.